We were doing this question, so you all must have done. You can match your answer. Here, base is not given. Whenever base is not given, we have to take the base as 10. So log A minus log B. In between negative sign is there. It means दोनों की क्या होगी यहाँ पे division in plus log 16. So it is multiplied. इनको हमने पहले सॉल्व कर लिया minus 2 log 3 can be written as log 3 square. आगे जो है वो 3 के ऊपर आ जाएगी. So it will become 9. Clear? So here log 3 raised power 2 minus log 7 over 45 as this. In the next step, it will be log 7 into 8. इनकी कटिंग हो गई divided by log 9. Sorry, number 9. Minus का साइन है तो 3 raised power 2 will be 9. तो 9 से डिवीजन कर दी. Again minus. फिर से divided by 7 over 45. इसको सॉल्व किया. Log 40 is equal to on the other side 1 plus log n as it is. Now we can take the base as 10 because base is not given. So here log 40 to the base 10 is equal to 1 can be written as log of a to the base a is always 1. Clear? So यहाँ पे base कितना है 10 है. Log of 10 to the base 10 is 1. Means 10 raised power 1 is 10. तो हम ये वैल्यू यहाँ पे 1 की क्या डाल देंगे log 10 to the base 10 plus log n to the base 10 because base is not given. Again here log a plus log b. We are using here product rule. It will be log a into b 10n. On the other side log 40. And if log a is equal to log b, it implies a is equal to b. So it means 40 is equal to 10n. यहाँ से n की वैल्यू 4 हो गई. So next question. Question number 2. Try to find the solution yourself for question number 2. If we log control m plus 2 log cube root of n minus 1 is equal to 0. Minus 1 is equal to 0. Then you have to find m raised power n. M raised power 9 into n raised power 4. You have to find the value of m raised power 9 into n raised power 4. तो इसमें भी क्या करेंगे हम यहाँ पे again base is not given, we will consider the base as 10. Solution 3 log m square root of that plus 2 log cube root of n minus 1 is equal to 0. It implies here 3 log m raised power that is 1 by 2. Again this power 3. So यहाँ पे multiplication है interest and quantity power that is power 2 plus 2 यहाँ पे multiplication है यहाँ पे power हो जाएगी log cube root of n means n raised power 1 by 3 raised power 2 minus 1 is equal to 0, which implies log m raised power 3 by 2 powers are multiplied, power is power further power plus log n raised power 2 by 3 minus 1 is equal to 0. 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 1
So in between plus sign is there, log A plus log B. We can write log A into B. M raised power 3 by 2 into n raised power 2 by 3 is equal to, we can write it as 1. ये वाला 1 जो है वो दूसरी तरफ होगा. Now here it is in log, we have to convert it in log. No base is given, we can take base as 10, which implies log of m raised power 3 by 2 into m raised power 2 by 3 to the base 10 is equal to log of 10 to the base 10. Because 10 raised power 1 is 10. So here on both the sides, we can compare log A is equal to log B, which implies A is equal to B. So here, m raised power 3 by 2 into n raised power 2 by 3 is equal to 10. Now we need here power 9. तो 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3/2 into यहाँ पे हमें power 9 चाहिए into x. So x is equal to 9 over 9 into 2 over 3. So x is equal to 6. हमें 6 से थ्रू आउट इक्वेशन को पावर में लेना पड़ेगा. So दोनों तरफ पावर 6 कर दी. m raised power. Nice response. Once you have written answer. 3/2 into n raised power 2 by 3 whole raised power 6 is equal to 10 raised power 6. अब इसको आप सॉल्व करिए. Implies m raised power 3 by 2 power 6. So it will be m raised power 3 by 2 into 6 into m raised power 2 over 3 into 6 is equal to 10 raised power 6. So m raised power 9 into n raised power 4 is equal to 10 raised power 6. The powers में कट हो गया. m raised power 9 and here 3 to the 6 3 to 4 10 raised power 4 is equal to 10 raised power 6 is the right answer. Next is question number 3. Right answer. So many students are giving answer. It is good habit. Next question. Question number 3. Simplify log of log x square minus log of log x. इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. So log of log x square minus log of log x. So in between minus sign is there. So using quotient rule, it will be log of log x square over log x. So here we have used quotient rule. Now here we can apply power 3. Log of power 2 है x is power. So 2 will be multiplied. 2 into log x divided by log x.
We have used here power. Now, दोनों कट हो जाएंगे. It will be log 2. So your answer will be log 2. So we have simplified. Base आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, otherwise you can leave it. If base is not given, it is understood base is 10. Nice response. Next is question number 4. Question number 4 में आपका response पहले आना चाहिए. Here also you have to simplify. Log of log to the base 2, log of again 2, base 52, फिर log of 16 to the base 2, log of 16 और सबका base क्या है? सबका base 2 है. Solution log of 16 सबका base 2. We have to find this value. यहाँ पे भी आप ब्रैकेट डाल दीजिए. तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा. It is equal to log of base 2 है log 2 log 216 can be written as 2 raised to power 4. 16 को हमने 2 raised to power 4 लिख दिया. Right response. Log the base 2. Here 4 can be multiplied. 4 log of 2 to the base 2. Now we know log of a to the base a is always 1. So it will be log of base 2 here 4. Log 2 इसकी वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी? 1 रहेगी. Log 2 to the base 2, it is 1. So now it will be log of, again log 4 can be written as 2 raised to power 2 to the base 2. It is log, this 2 will be multiplied 2 into log of 2 to the base 2. So further it will be log 2 to the base 2. This log of 2 to the base 2 will become 1. So 1 से multiply करने की जरूरत नहीं है. Again log of 2 to the base 2 will be 1. So answer will be 1. Next is question number 5. Now you have to find the value of x. Find the x. If log of log x to the base 3 whole to the base 2 is equal to 4. Now log of this number to the base 2 is 4, which implies 2 raised to power 4 is equal to log of x to the base 3. So 2 raised to power 4 is 16
log of x to the base 3. So we can write it as log of x to the base 3 is equal to 16. फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. इट मींस 3 रेज पावर 16 is equal to x. 3 raised power 16 is equal to x. Next question number 6. In that question, again you have to find the value of x. Find x. If condition is given in log of 15 under 5 to the base x is equal to 2 minus log of 3 under 5 to the base x. Now Sanju ma'am, you are here you are given this equation. We know bases are same. So what will be their log of 15 under 5 to the base x is equal to this. This is given. We can bring this term log x, log of 3 into 5 to the base x on the other side. So it will be like this. अभी यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल कब लगा सकते हैं जब हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस आर डिफरेंट, तो हमने बाय बेस चेंजिंग लॉ बेसिस को इक्वल करना होता है. बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो वी कैन यूज हियर प्रोडक्ट रूल. लॉग ऑफ 15 अंडर रूट 5 into 3 under root 5 to the base x is equal to 2. Is log of here 3 into इन दोनों की प्रोडक्ट 5 हो जाएगी. 15 into 15 225, और we can write log of 15 square to the base x is equal to 2. Now here it is equal to 2. We can convert it into exponential form, or we can write here power rule. 2 log 15 to the base x is equal to 2. 2 से 2 कट हो जाएगा. We are left with log of 15 to the base x is equal to 1. Log of 15 to the base x is equal to 1. So we can write it in exponential form. So it will become x raised power 1 is equal to 15. So x is equal to 15 is the right answer. Next is question number 7. Again, solve the question number 7. If log 25
to the base x minus log of 5 to the base x plus log 1 over 125 to the base x is equal to 2. Then find x. Value find it करनी है. Go again to that question. फटाफट करिए. And you can type your answer in chat box. Bases are same in all, which implies log of 25 minus have we can use here quotient rule plus have we can use here product rule and base will be x is equal to 2, which implies log of 1 over 5 raised power 2 to the base x equal to 2, which can further be written as 2 log 1 over 5 to the base x is equal to 2. ये 2 तो जाके डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास log of 1 over 5 to the base x is 1. So we can write here in exponential form, x raised to power 1 is equal to 1 over 5. That is, x is equal to 1 over 5. So these are the simple questions you can do. Next is question number 8. In question number 8, again you have to find the value of x, and here it is log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16 is equal to 21 over 2. अब यहाँ पे bases अपने different हो गए. Here it is 2, here it is 4, and here it is 16. तो हम इन सब में से अगर इनके bases जो है वो same नहीं है तो ना तो हम यहाँ पे product rule use कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे quotient rule use कर सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले bases इक्वल करने पड़ेंगे. हमने ये किया हुआ है कि log of a to the base b into log of b to the base a. This product is always 1. Here, this product is always 1. तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बेस. तो सबकी यहाँ पे नंबर x है तो हमने इनको इंटरचेंज कर देना. वी कैन राइट log of a to the base b equal to 1 over log of b to the base a. क्लियर? तो इससे क्या होगा, सबके बेसिस x हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे. So it implies 1 over log of 2 to the base x plus 1 over log of 4 to the base x and it is equal to 21 over 4. Which implies, अब इनमें powers we can make in the form of multiplication. It will be 1 over 2 log x plus 1 over 4, sorry, 1 over log 4 को लिखेंगे 2 raised power 2 the base x plus 1 over
log 16 को लिखेंगे 2 raised power 4 to the base x is equal to 21/4, which implies अब सब में हमने क्या किया, बेस सबके x है, यहाँ पे भी log of it is not 2, it is simply log of 2 to the base x, it is not power, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, तो सब में क्या किया हमने 1 over log of 2 to the base x plus यहाँ पे 2 पावर की तो आगे आ गई 1 over 2 log of 2 to the base x plus 1 over 4 log of 2 to the base x equal to 21/4. अब सब में कॉमन क्या आ गया 1 over log 2, 1 over log of 2 to the base x कॉमन ले लिया 1 over 1 plus 1 over 2 here plus 1 over 4 is equal to 21/4. Now simplify this. So फटाफट simplify करोगे and you will be able to find the value of x. So here 1 over log 2 to the base x into their LCM will be 4 plus 2 plus 1 is equal to 21/4. So which further implies 1 over log of 2 to the base x is equal to into इसको सॉल्व करके 7/4 21/4 इसको कट कर सकते हैं, so it is 3. So what will be the answer? One over log of 2 to the base x is equal to 3, which implies log of 2 to the base x is equal to 1/2. So we can write it in exponential form. X raised power 1/3 equal to 2. Taking cubes on both sides, value of x will be 2 cubes. So x is equal to 8 is the answer. X is equal to 8 is the answer. So next we are going to start how to solve the questions by using log tables. सबसे पहले है हाउ टू कन्वर्ट द नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, आपने छोटी क्लास में भी किया होगा कि जब हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या मेथड होता है. फॉर एग्जांपल 425.62 425.62 इसको जब हम लिखते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम, आफ्टर 1 डिजिट वी पुट द डेसिमल. तो 1 डिजिट वो जो है उसके बाद आपने डेसिमल लगाना, दैट शुड बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए. इट विल बी फ्रॉम 1 to 9. तो यहाँ पे डेसिमल को आपने जब शिफ्ट किया, इट कैन बी रिटन एज 4.2562 into 10 raised power 2 places शिफ्ट हुआ, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. अब इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये कौन सा नंबर होना चाहिए, इट विल बी अडिटिव फ्रॉम 1 to 9. ठीक है, एक ही डिजिट का, जीरो नहीं होना चाहिए. और ये जो 10 रेज़ पावर है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक.
कैरेक्टरिस्टिक, जो पावर ऑफ 10 है उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें जो नंबर ये वाला हमने कन्वर्ट किया, ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसका लॉग ले पाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास है 0.004256, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आफ्टर 1 प्लेस 4 है, 4 के बाद डेसिमल लगाना है, कितने प्लेसेस शिफ्ट हो गया, 1 2 3, so it can be written as 4.256 into 10 raised power -3। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, यहाँ पे इक्वल्स टू, और इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, -3। अब -3 को हम ऐसे भी लिखते हैं 3 के ऊपर बार, इट मींस इट इज -3, ठीक है। समटाइम नंबर इज नॉट पॉजिटिव, नंबर नेगेटिव होता है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल फिर से कह रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, नंबर इनटू 10 रेज़ पावर, उस फॉर्म में आपने इसको लिखना होता है, जो पावर है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अब हमारे पास नंबर है -0.5229। अब ये नंबर भी हमारे पास नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, इसको पहले हमने पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाने के लिए अब ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है, तो इसको -0.529 एज इट इज +1 -1, इस फॉर्म में इसको लिख लिया, एक बार हमने प्लस कर लिया और एक बार इसको माइनस इज इक्वल टू, तो क्या हो गया हमारे पास ये नंबर -1 को हमने लिख दिया लाइक दिस, और ये जो है 5229, इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया, 1.0000, देन 0.5229, ये आपके पास नेगेटिव नंबर है। 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 177, देन हियर 4 और यहाँ पे 0। अब ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो हम इसको इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, आपके पास वो नंबर पॉजिटिव हो गया और ये वाला आपके पास नेगेटिव है, तो इसको हमने क्या लिखा, ये नेगेटिव और यहाँ पे 0.4771। अब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट आपके पास टोटली पॉजिटिव है और इधर वाला जो है वो आपके पास नेगेटिव हो गया, क्लियर। तो डेसिमल के नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कल एक टेबल शेयर करूंगी मैं, ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल, फिर वहां से इनकी वैल्यूज चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आती है।